गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरा कॉस्मेटिक कलेक्शन जिसमें लिपस्टिक, परफ्यूम्स और बॉडी वाटर्स एंड बॉडी क्रीम्स रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट आई विल शो यू माय ज्वेलरी कलेक्शन बिकॉज बहुत सारी ज्वेलरी है, दे नीड अ वीडियो ऑफ इट्स ओन। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। And voila, this is where I keep my lipsticks. They're pretty well organized. They're organized by colors and brands. और मेरे convenient जैसे लगते हैं मैं वैसे करके स्टोर की हूँ. They are not placed randomly. और जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे कंपार्टमेंट्स में मैं रखती हूँ. दे आर 32 एंड 24 कंपार्टमेंट्स का बॉक्सेस है और ऐसे स्टोर करना मैं पसंद करती हूँ ताकि मुझे ब्रांड भी दिखाई दे और कलर भी दिखाई दे. I got them from Amazon and Flipkart, and if possible I will link them in the description box. ये वाले ड्रॉर में मैं ज़्यादातर अपने लिप ग्लॉसेस रखती हूँ और थोड़े बहुत लिपस्टिक, जैसे कि आप देख सकते हो. दिस इज़ हाउ आई स्टोर देम इन दिस डिवाइडर. और जैसे ये 24 का कंपार्टमेंट है और इसमें आप लिपस्टिक के ब्रांड्स भी देख सकते हो और ऊपर से आपको कलर्स भी दिखाई देंगे सो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. Now I will show you few swatches of the lipsticks that I have on my hand. Most of the lipstick that I have are mauvish, reddish and pinkish, and few nudes as well. So here we go, and let's see the swatches. This is from Huda. This Huda lipsticks that you will see on my video, I got all of them from Bangkok while I was there. I don't think so they are original Huda, but I love the packaging, pretty similar to the original ones, and the color payoff extremely good. Smell उतना अच्छा नहीं है तो I will not say they're good smelling, but if you want color, like as in the color payoff, they are highly recommended. And this is L18, amazing color. Like I said, most of them are in shades of mauve, red and pinks. And this is an EOS balm which I love using. They keep your lips well moisturized. Most of them are gone. Few मतलब रह गया है which I'm still using. They are a little on the costlier side, but they're extremely good for your skin and lips. This is another drawer where I keep my lipsticks and lipsticks only, no lip glosses in it. Or most of the lipsticks that I have here are from Bobbi Brown, few are from MAC, and then Rimmel London, CoverGirl, L'Oreal, Maybelline, ADS, Blue Heaven. I use all the brands. I do not differentiate. मुझे जो पसंद है वो है color. If the color is good, I really don't care. But yes, बहुत चीप ब्रांड्स नहीं यूज़ करती हूँ. ओनली रीज़न इज़ दे चैप माई लिप्स अ लॉट. तो या that's that. So I'll again show you few swatches of the lipsticks that I use, or hope you like it. This one is from Wet n Wild, or this is from Maybelline. Lip gloss भी नहीं है, lipstick भी नहीं है. They have a category of their own. This is Smart Girl, not very cheap, but color payoff is extremely good. So this is an overview, and this is how I store my lipstick and my lip glosses. And this is my perfume collection. This is a small part in my wardrobe where I keep my perfumes and body mist. तो देखते हैं इसमें क्या क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू कैन सी इज़ दैट येलो कप जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया ऑन माई बर्थडे. इसमें मैं अपना आई लैश कर्लर, कुछ काजल, कोल पेंसिल्स एंड मस्कारा रखती हूँ. एंड this is a scented soap which I don't use, but I keep it for display purpose. और
ये जो आप देख रहे हैं ये है कुछ सेंट्स के सैम्पल्स जो मुझे मिले थे फॉर रिव्यू। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई हैव केप्ट देम फॉर डिस्प्ले पर्पज एज वेल। ये कुछ बक्से हैं जिसमें मेरे परफ्यूम्स आए हैं। आई कुड नॉट थ्रो देम बिकॉज आई लव द पैकेजिंग सो मच कि मैंने रख दिया है। जैसे बियॉन्से का राइस देखिए, लुक एट द पैकेजिंग सो वेल, जिमी चू, विक्टोरिया सीक्रेट, वर्साचे, लारिवे, so I couldn't throw them, so I've kept them as well. I know it's kind of a hoarding, but I can't help. These are few hand sanitizer. I don't use them. I just kept them because I like the smell of it. ये कुछ बॉडी मिस्ट है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट एंड फ्यू आर फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। दिस इज़ बियॉन्से राइस, लुक एट द पैकेजिंग, इट इज़ अमेजिंग लाइक अ क्वीन। और ये है विक्टोरिया सीक्रेट नॉयर टीज, इट कम्स विद अ पम्प। दिस इज़ फेम बाय लेडी गागा. Love the packaging as well. This is Jimmy Choo Blossom, beautiful packaging. This is Miss Dior by Christian Dior. Love the packaging as well. And this is Ralph Lauren. These are few samples that I got. Azaro, then Skin by Titan. Then I have Pink, Pretty Women, Celine Dion, Versace, Adidas, and so on and so forth. और इसमें मैं रखती हूँ अपना ज्वेलरी जो पार्ट 2 में आएगा। और अभी जो आप देख रहे हैं ये है एक ज्वेलरी आर्मवर्क, लेकिन मेरे ज्वेलरी इसमें नहीं आएंगे, बल्कि इसमें मैं अपना बॉडी मिस्ट और बॉडी बटर्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स ये सब रखती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं और इसमें मैं अपना हेयर और बॉडी प्रोडक्ट्स रखती हूँ। उसमें एक ड्रॉर भी है जिसमें अपना मिसलेनियस स्टफ्स रखती हूँ, जैसे रेजर ब्लेड्स एंड एवरीथिंग। एंड इन द लास्ट ड्रॉर आई कीप माई पर्सेस एंड माई you know hair products as well. So like you can see on the first compartment there is a hand cream, Azure के कुछ products हैं. Then I have Cetaphil which is extremely good if you have chapped lips. Dove का एक moisturizing cream है. There is a Bodo Calendula. There is a Plum का mask. Amber Romance from Bath and Body Works makeup remover by Maybelline. Then like I said, Cetaphil products which is extremely good for my skin. So ये सब मैं रखती हूँ. And there is a sweet scent कुछ body mist है. This is a very special gift. मेरी एक छोटी friend है जिसने मेरे को ये दिया है and I cherish it a lot. Like I have a Pond's फेस वॉश, पॉल मिचेल हेयर प्रोडक्ट, ट्रेसेमे, लॉरियल जिसका ढक्कन कहाँ है मुझे नहीं पता है. दिस इज़ ऑल्सो अ लिव इन कंडीशनर. देन दिस आर फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम different hotels that I've stayed. I have got them because these are complimentary and I kept them for display purpose. Calgon body butter, then Richie Richie by Nina Ricci hand cream, Tresemme ka dry shampoo and everything. And in the last drawer I keep a few hair gel, body mist, oil and biotic के कुछ products, toner, moisturizer and all those jazz. और ये वेला का एक हेयर सीरम है. दिस इज़ लाइक माई होली ग्रेल, आई स्वेयर बाय इट एंड दिस इज़ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन लुक्स. दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ माई मेकअप ऑर्गेनाइजेशन. मिलते हैं पार्ट 2 के साथ एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ. अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम मे द ऑड्स बी ever in your favor. Goodbye.